नमस्कार। आज हम मार्कस ऑरेलियस के निजी विचारों को खंगाल रहे हैं, जिन्हें दुनिया मेडिटेशंस कहती है। हमारे पास कुछ लेख और शोध भी है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई प्रकाशित किताब नहीं थी। ये तो उनके अपने नोट्स थे, अपने लिए लिखे हुए। हाँ, शायद खुद को समझाने के लिए, मुश्किलों में रास्ता दिखाने के लिए। तो हम देखेंगे कि ये स्टोइक विचार उनके लिए कितने असली थे, कितने व्यवहारिक। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि एक सम्राट के लिए आत्मचिंतन, कर्तव्य और वो प्रकृति से तालमेल का क्या मतलब था, और ये आज भी इतने काम के क्यों लगते हैं। अच्छा सवाल है। तो पहले मार्कस ऑरेलियस के कौन? हाँ, रोमन सम्राट थे, पर सिर्फ उतना ही नहीं। उनकी पढ़ाई तो जैसे बयानबाजी से शुरू हुई। हाँ, रिटोरिक से, पर उनका झुकाव दर्शन की तरफ हो गया, खास तौर पे स्टोइसिज्म की तरफ। और इसमें उनके गुरुओं का भी हाथ रहा होगा, जैसे सेक्सटस रस्टिकस। बिल्कुल, उन्होंने ही उन्हें सादगी, अनुशासन और प्रकृति के हिसाब से जीने की अहमियत बताई। और मार्कस का जो स्टोइसिज्म था ना, वो बड़ा जमीनी था। दुनिया कैसे काम करती है, इससे ज्यादा जोर इस बात पर था कि जिया कैसे जाए, नैतिकता पर। अच्छा, तो नैतिकता सबसे ऊपर। तो फिर उनके हिसाब से सबसे जरूरी क्या था जीवन में? लेख कहते हैं कि सद्गुण ही असली अच्छाई है। हाँ, ये केंद्रीय बात है, सद्गुण यानी वर्च्यू। बाकी सब चीजें, सुख, दुख, शोहरत, बदनामी, अमीरी, गरीबी, ये सब एक तरह से बाहरी हैं। बाहरी इनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो सुनने में थोड़ा क्रांतिकारी सा लगता है। हाँ, लग सकता है, पर देखिए, स्टोइक सोच ये नहीं कहती कि आप महसूस करना बंद कर दें। नहीं, वो कहते हैं कि बाहरी घटनाएं हमें सीधे परेशान नहीं करती। तो फिर क्या करता है? उन घटनाओं पर हमारी जो राय है, हमारा जो जजमेंट है, वो हमें परेशान करता है। मार्कस लिखते भी हैं, अपनी राय हटा दो और मुझे चोट लगी है कि शिकायत हट जाएगी। वाह, कंट्रोल हमारे अंदर है, हमारी सोच में, बिल्कुल हमारी प्रतिक्रिया में। अच्छा, इसी से जुड़ा उनका एक और विचार है, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना, प्रकृति या भाग्य का विधान मानकर। ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता, खासकर जब कुछ बुरा हो रहा हो? हाँ, ये शायद स्टोइसिलन की सबसे चुनौतीपूर्ण शिक्षाओं में से एक है। पर मार्कस का मानना था कि सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है, ब्रह्मांड के तर्क का हिस्सा। तो बस मान ले? देखिए, इसे हार मान लेना नहीं समझना चाहिए। ये वैसा है जैसे हम डॉक्टर की कड़वी दवा ले लेते हैं क्योंकि पता है कि वो हमारे भले के लिए है। ये समझने की कोशिश है कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, पर अपनी प्रतिक्रिया तो कर सकते हैं। बिल्कुल, लक्ष्य है चीजें जैसी हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर जीना, प्रकृति के साथ। समझ गई। तो एक तरफ अंदरूनी सोच पर काम, दूसरी तरफ बाहरी घटनाओं को स्वीकारना। पर क्या इससे इंसान समाज से कट नहीं जाता? अगर सब स्वीकार ही करना है तो दूसरों के लिए कुछ करने का क्या मतलब? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मार्कस के लिए सामाजिक कर्तव्य दूसरों के प्रति जिम्मेदारी बहुत अहम थी। अच्छा। हाँ, वो मानते थे कि इंसान स्वभाव से ही सामाजिक हैं। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारा फर्ज है कि हम समाज की भलाई के लिए काम करें, न्याय से, ईमानदारी से। तो ये स्वार्थ से ऊपर उठने की बात है। हाँ बिल्कुल, स्टोइसिज्म व्यक्ति और समाज के बीच एक संतुलन सिखाता है, ये नहीं कि बस अपने में खो जाओ। ये दिलचस्प है, अंदरूनी शांति और बाहरी कर्तव्य दोनों साथ साथ। इसी अंदरूनी शांति के लिए वो कहते थे कि अपने मन के तर्क करने वाले हिस्से पर ध्यान दो, रूलिंग फैकल्टी जिसे कहते हैं। हाँ, और बाहरी विकर्षणों से बचो। वो मशहूर बात है ना उनकी कि अपने अंदर के छोटे से शांत कोने में लौट जाओ, लिटिल टेरिटोरी ऑफ दाई ओन। इसका क्या मतलब है असल में? कोई जगह है अंदर? एक तरह से हाँ, ये बाहरी शोर शराबे से हटकर अपने मूल सिद्धांतों, अपने विचारों पर ध्यान लगाना है। एक मानसिक पनाहगाह जहाँ बाहरी उथल पुथल के बावजूद शांति मिल सके। आत्मचिंतन का अभ्यास। हाँ, खुद को याद दिलाना कि असली नियंत्रण हमारे अंदर है। तो ये मेडिटेशंस, जिसे शायद वो खुद के लिए स्वयं के प्रति कहते, ये असल में उनकी निजी डायरी थी। रोज की जद्दोजहद के बीच अपने सिद्धांतों को जीने की कोशिश। बिल्कुल सही। युद्ध हो, बीमारियां हो, दरबार की राजनीति हो, इन सब के बीच शांत और सद्गुणी बने रहने का उनका अपना तरीका था। ये दुनिया बदलने की कोई गाइड बुक नहीं थी। ये खुद को बेहतर बनाने, मुश्किलों का सामना करने के लिए मानसिक मजबूती पाने का जरिया थी। सिद्धांतों को जानना काफी नहीं, उन्हें जीना जरूरी है। शायद यही उनका मकसद था। तो अगर हम सार निकालें मार्कस ऑरेलियस के इन विचारों से, ये सीखने को मिलता है, असली चीज अंदरूनी सद्गुण है,
हमारी सोच ही हमारी परेशानी की जड़ है, ना कि बाहरी घटना। जो होता है उसे स्वीकारना सीखें, समाज के प्रति अपना फर्ज निभाएं और अंदरूनी शांति के लिए आत्मचिंतन करें। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ा जा सकता है। सोचिए, अगर आज की इस जटिल दुनिया में कोई सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं को तर्क संगत रखने पर ध्यान केंद्रित करे और बाहरी चीजों को या दूसरों के कामों को वैसे ही स्वीकार कर ले जैसे वे हैं, बिना अपनी शांति भंग किए, तो जीवन को देखने का नजरिया कितना बदल सकता है। तो आज हम मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस में जो ख्यालात हैं उनका जायजा ले रहे हैं। जी। हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए हैं, कुछ तराजुम, कुछ तशरीहात, और मकसद ये है कि स्टोइक फ़लसफ़े के मतलब वो बुनियादी उसूल समझने जो शायद आज भी अहम हो। बिल्कुल। और ये ज़राए खासे दिलचस्प इसलिए भी हैं कि ये एक शहंशाह के ज़ाती ख़यालात हैं, आप समझें। गहरे फ़िलसफ़ियाना उसूल भी हैं साथ साथ। सही। तो हम कोशिश करेंगे उन कदीम नज़रियात को समझने की। ज़रूरी नहीं कि हम उन्हें माने या रद्द करें, बस समझना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये स्टोइसिज्म ये है क्या असल में। ज़राए तो कहते हैं ज़ीनो और स्टोआ से शुरू हुआ। जी, वहीं से इब्तिदा हुई। लेकिन इसका मरकजी नुक्ता जो कुछ तशरीहात में मिलता है वो अक्ली रूह या रैशनल सोल है ना? जी हाँ। और मार्कस ऑरेलियस उसी को अपनी जबान में हुक्मरान फैकल्टी कहता है, गवर्निंग फैकल्टी। हुक्मरान फैकल्टी? जी, मतलब हमारी जात का वो हिस्सा जो सोचता है, फैसला करता है, समझता है, हमारा रीजन आप कह लें। अच्छा। और स्टोइसिज्म का जो बुनियादी मकसद है ना, वो इसी हुक्मरान फैकल्टी को फितरत के मुताबिक ढालना है। फितरत के मुताबिक जीना, इसका क्या मतलब हुआ फिर? देखें, फितरत के मुताबिक जीने का मतलब है अपनी अक्ली फितरत और अपनी समाजी फितरत, उन दोनों को पहचान कर उसके मुताबिक अमल करना। ये बात कई ज़राए में आती है। यहाँ ये भी बड़ा दिलचस्प है कि ज़राए में हेराक्लीट्स और सुकरात जैसे पुराने फलसफियों का जिक्र आता है। जी बिल्कुल। उनका क्या असर था स्टोइसिज्म पर, और खासतौर पे मार्क्स पर? जैसे हेराक्लीट्स का वो ख्याल कि कायनात बदल रही है हर वक्त। हाँ, वो वक्त एक दरिया की मानंद है वाला तस्वर। जी। और वो लोगोस का नजरिया? बिल्कुल। हेराक्लीट्स के ये नजरियात, वो लोगोस यानी कायनाती अक्ल और ये मुसलसल तब्दीली, ये स्टोइक कायनात के तस्वर की बुनियाद बने। और सुकरात? और सुकरात तो अपनी जिंदगी और मौत में उसूलों पर जिस तरह कायम रहे, वो स्टोइक दानिश्वर के लिए एक, आप समझें, एक रोल मॉडल बन गए। अच्छा। मार्क्स बार बार उनका हवाला देता है, उनसे सीखने की बात करता है। ये सिर्फ नजरियात नहीं थे, ये अमली मिसालें थी। और एक मरकजी ख्याल जो बार बार सामने आता है वो ये है कि असल मसला बैरूनी वाकयात नहीं है, बल्कि उनके बारे में हमारी जो राय है, हमारी जजमेंट, वो असल चीज है। एक जगह लिखा है, अपनी राय हटा दो, शिकायत खत्म। जी, शिकायत खत्म हो जाएगी। क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या यही तरीका है स्टोइक का, मतलब दर्द, नुकसान, इन सब से निपटने का? देखें, ये स्टोइक नफ्सियात का आप कह लें कोर पॉइंट है। उनके नजदीक बाहर की चीजें, सेहत हो, दौलत, शोहरत, यहाँ तक कि मौत भी, वो बजाते खुद अच्छी या बुरी नहीं है। अच्छा। वो गैर जानिबदार हैं, इनडिफरेंट थिंग्स। हमारा रद्द अमल, हमारी राय, हमारा जजमेंट, वो उन्हें अच्छा या बुरा बनाता है। तो अगर हम अपनी राय को काबू कर लें? जी, अगर हम अपनी राय को अक्ली जांच पड़ताल से गुजारे तो हम अंदरूनी सुकून पा सकते हैं, चाहे बाहर हालात कुछ भी हों। ये आसान नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर ये तरबियत और मश्क का काम है, मुसलसल मश्क। इसी मंतक को अगर आगे बढ़ाएं तो फिर जो मुश्किल लोग होते हैं या जो बुरा सलूक करते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए? ज़राए में गुस्सा करने के बजाय समझने पर जोर है। हाँ। ये ख्याल कि लोग नादानी में गलती करते हैं, जो कोई नाइंसाफी करता है वो गुनाह का मुर्तकिब होता है, ये वाली बात। जी, मार्कस का नुक्ता नजर यही है। वो कहता है लोग गलती इसलिए करते हैं कि वो सच और झूठ, अच्छे और बुरे में तमीज नहीं कर पाते। अच्छा। वो हमारी तरह ही अक्ली और समाजी मखलूक हैं, बस भटक गए हैं। तो या तो उन्हें सिखाना चाहिए या फिर बर्दाश्त करना चाहिए। इसी में वो थियोफ्रास्टिस का भी जिक्र आता है ना, कि ख्वाहिश का गुनाह गुस्से के गुनाह से बुरा है। हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है। हालांकि ये रिवायती स्टोइक नजरिए से थोड़ा हटकर है, क्योंकि वो तो तमाम अक्ली गलतियों को बराबर समझते थे। अच्छा। और ये समाजी पहलू भी काफी अहम लगता है। बहुत अहम।
कि हम सब एक बड़े कुल का, एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, एक कायनाती शहर के शहरी। बिल्कुल। और हमें मिलजुल कर रहना है। इंसाफ, जस्टिस एक बुनियादी खूबी है। यकीनन स्टोरिसिज्म फर्द को अलग थलग नहीं देखता। हमारी फितरत ही समाजी है, तो दूसरों के साथ इंसाफ करना, मेहरबानी करना, ये असल में अपनी फितरत की पैरवी करना है। और कायनात एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। जी, एक मरबूत निज़ाम, जहां हर वाकया, हर तब्दीली एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। मार्कस तो कहता है, जो कुछ भी होता है वो इंसाफ के साथ होता है। और इसी वजह से वो जिंदगी और शोहरत की नापाईदारी पर इतना जोर देता है। जल्द ही तुम राख हो जाओगे। बिल्कुल। वो ऑगस्टस, पोम्पी, इन बड़ी शख्सियात का जिक्र करता है, ये दिखाने के लिए कि सब आर्जी हैं। तो फिर असल काम क्या है? अपनी हुक्मरान रूह को बेहतर बनाना। जी, असल काम यही है, खुद शनासी, ये समझना कि क्या हमारे इख्तियार में है, क्या नहीं। हमारे ख्यालात, हमारे आमाल। जी, ये हमारे इख्तियार में है। बैरूनी वाकयात, दूसरों के काम, वो नहीं। और उसूलों पर तवज्जो देना। हाँ, बुनियादी इंसानी खूबियां, इंसाफ, हिम्मत, एतदाल, दानाई, इनको अपनी जिंदगी का मरकज बनाना, यही है वो अंदरूनी किला जिसे मजबूत करना है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये निकलता है कि असल ताकत, असल सुकून वो बाहर की चीजों को बदलने में नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी रद्दे अमल को, अपनी सोच को, अपने फैसलों को संभालने में है। यकीनन असल कंट्रोल वही है। और यहाँ एक, आप कहें, एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है गौर करने के लिए। वो क्या? अगर मकसद अंदरूनी सुकून है और बैरूनी चीजों से एक किस्म की लाताल्लुक की, तो फिर समाजी जिम्मेदारियों का क्या? दूसरों की भलाई के लिए अमल करने की जो बात है। हाँ, क्योंकि मार्क्स खुद कहता है, एक समाजी अमल से दूसरे समाजी अमल की तरफ बढ़ते रहो। बिल्कुल। तो क्या ये मुकम्मल लाताल्लुकी है, या ये एक ऐसी मसरूफ जिंदगी है जिसमें अंदरूनी सुकून बरकरार रहे? ये तवाज़न कैसे कायम हो, ये सवाल मेरे ख्याल में आज भी बहुत मुताल्लिक़ है। अज आप गल करन जा रहे हैं एक बहुत ही खास शख्सियत बारे, मार्क्स ऑरेलियस, रोम दा सम्राट, पर नाल ही एक बहुत डूंगा स्टोइक फिलासफर भी। हाँ जी, ते खास तौर ते उन्हां दी किताब मैडिटेशंस बारे, जो असल विच उन्हां दी निजी डायरी सी। बिल्कुल, ते साडे कोल इस ते काफी समग्री है, कुछ अंश, इतिहासिक जानकारी ते स्टोइक फिलासफी बारे भी। अपना मकसद यही है कि मार्क्स दे मुख्य विचार समझिए, स्टोइकवाद की है, ते इस सदियां पुरानियां गल्लां अज भी मतलब साडे लिए किवें काम आ सकदियां ने। शुरुआत स्टोइकवाद तो ही करते हैं, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। देखो, ये नाम आया एथेंस दे एक स्टोआ तो, मतलब एक खास किस्म दा बरामदा या पोर्च जिथे इस दे बानी जीनो ने पढ़ाउणा शुरू किया सी, कोई 300 ईसा पूर्व दे आसपास। अच्छा, यानी जगह दे नाम तो? हाँ जी, ते एदे मुख्य सिद्धांत, पहला ता तर्क यानी लॉगोस विच विश्वास, फिर कुदरत दे हिसाब नाल जीना, ते अपनी भावनावां नू समझना, उन्हां ते काबू पाउणा मतलब दबाउणा नहीं, दबाउणा नहीं, मतलब तर्क नाल उन्हां नू सही दिशा देनी। ते सब तो अहम शायद उन्हां चीज़ां लई एक की कहंदे ने समानता या बेलागी रखनी जो साडे वस च ही नहीं। जिवें किहड़ियां चीज़ां? जिवें दौलत, सेहत, लोग की कहंदे ने, शोहरत, ये सब स्टोइक मंदे से कि ये चीज़ां अपने आप च ना चंगियां ने ना माड़ियां। अच्छा, पर सेहत तो चंगी हुंदी है ना? हाँ जी, पर देखो स्टोइक कहंदे से कि असल चंगियाई या बुराई साडे अपने कम्मां च है, साडे निर्णयां च। सेहत होवे या ना, असी नेकी नाल जी सकदे हां, ये है मुख्य गल। समझ गया, यानी कि फोकस अपने अंदर ते अपने कम्मां ते रखना। बिल्कुल, साडे वस च की है, साडे विचार, साडे कम, साडा अपना चरित्र, बस। ठीक है, ते मार्क्स ऑरेलियस ते होर केड़े फिलासफरां दा असर सी? सुकरात वगैरह दा नाम आउंदा है। हाँ बिल्कुल, सुकरात दा बहुत ज्यादा, खास करके आत्म परीक्षा वाली गल, अपने आप नू जानना, ते हेराक्लिट्स दा भी, जिसने कहा सी कि सब कुछ बदल रहा है, निरंतर बदलाव, ते लोगोस दा विचार, ये सब तुहानू मेडिटेशंस विच मिलेगा। अच्छा, ता मेडिटेशंस दे कुछ मुख्य थीम की ने? कई ने ते वार-वार आउंदे ने। एक तां ओही गल, अपनी आत्मा दी जांच करदे रहना, उसनू न्यायपूर्ण सही बना के रखना। दूजा ए सच्चाई कि ब्रह्मंड च हर चीज बदल रही है। वो कहंदे ने समा एक नदी वांग है,
ਸਭ ਕੁਝ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੀਜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੈਤੂਨ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨੂਨਟਮ 'ਚ ਡੈਨਿਊਬ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਯੁੱਧ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖੋਜ। ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਮਲੀ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਜੀਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤਿਆ ਕੱਲ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਰਸਟਿਕਸ, ਐਪੋਲੋਨੀਅਸ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰਵਜ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਟੋਇਕਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 4 ਗੁਣ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਤਰਕ, ਨਿਆਂ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸੰਜਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਂਤ, ਮਕਸਦ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ। ਕੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜਾ ਸੁਸਤ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਇਕਵਾਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Ever feel like you're just drowning in information, trying to drink from a fire hose? Oh, yeah, all the time. Or you just want to get the essentials, you know, the core of a big idea, but quickly, without getting totally bogged down. Exactly. You want the deep understanding, but, well, efficiently. That's precisely what we do here on The Deep Dive. We sift through it all for you. We take these complex topics, pull out the really valuable bits, the surprising connections, give you that solid grasp without the overwhelm. And today, we are diving deep into a real classic, Marcus Aurelius's Meditations. We've got the text itself, of course, but also some really helpful historical notes, context, stuff to bring it alive. So if you're listening and you're that person, the learner, someone who wants solid knowledge but needs it distilled clearly, you're definitely in the right spot. Our mission today, it's really to unpack the core ideas of Stoicism as Marcus Aurelius wrote about them in Meditations, why they mattered so much to him, this Roman emperor, and crucially, why these ancient ideas still feel so relevant, so powerful for us now. Okay, Stoicism. It's a term we hear thrown around, maybe think it just means bottling up emotions, but where did it actually start? Well, yeah, it's more nuanced than that. If you think about philosophy really getting organized, Socrates is the big starting point, 5th century BCE. Okay. But these really coherent belief systems, these schools of thought,
They mostly popped up in the Hellenistic period after Alexander the Great. Ah, okay, so later. Yeah, and Stoicism was a major one, hugely important, especially for the Romans and definitely for Marcus Aurelius. And the name itself, Stoicism, that's quite specific, isn't it? It is. It comes directly from the place where the founder, Zeno of Citium, first started teaching. This was back in Athens, late 4th century BCE. Where was that? He taught in the Stoa, Poikile, actually. It's basically a painted, covered walkway, a public colonnade. Huh. So the philosophy is named after a porch. Pretty much. The place gave the name to the whole school of thought. So Zeno kicks it off. But it wasn't static, right? It evolved. Yeah. Oh, absolutely not. Zeno laid the foundation, sure. But then his successors, Cleanthes and especially Chrysippus, they really built on it. Chrysippus. Tell me about him. Chrysippus was the systematizer, a real intellectual force. He wrote tons and is credited with taking Zeno's initial ideas and organizing them into this comprehensive philosophical system. Okay, so he structured it all. Yeah, logic, physics, ethics. He laid out the framework. And a lot of the key terms, the core concepts we find later in Meditations, they come from this earlier, more, let's say, academic Stoicism shaped by Chrysippus. He built the house on Zeno's foundation, you could say. Right, okay, so that early structure is there. Yeah. But you mentioned Meditations reflect something later, more stripped down. Exactly. By the time Marcus is writing, 2nd century CE, Stoicism has changed. It's what we often call late Stoicism. And Meditations is a key example. A prime example. And it's particularly influenced by one figure, Epictetus. Our notes call this later version radically stripped down, focusing maybe more on the practical, ethical core. Epictetus. Yeah. His name keeps coming up. Who exactly was he? Why was he so important? Epictetus has this incredible story. Born a slave, eventually freed, then he gets exiled from Rome by Emperor Domitian. Wow. So he sets up a school way over in Nicopolis in Greece, and people traveled huge distances just to hear him teach. That says something about his teaching. It really does. It must have been incredibly powerful, very practical. So what did he teach that grabbed people? Well, luckily, one of his students, Arrian, who was a historian and a politician himself, took detailed notes. Ah, good old Arian. Yeah, these became the discourses. And Arrian also created a shorter version, like a highlights reel, called the Enchiridion. That means handbook or manual. A practical guide. Precisely. And here's the direct link to Marcus. In Book 1 of Meditations, Marcus explicitly thanks his mentor, Rusticus, for introducing him to Epictetus's lectures. Could be the discourses, maybe other notes. So a direct line of influence. Definitely. And look at the form. The Enchiridion is these short, punchy entries, not really connected into one long argument. A bit like Meditations itself. Exactly like Meditations. Both feel like collections of personal reminders, practical wisdom for living day to day, not these grand philosophical treatises. It seems Marcus really connected with Epictetus's focus. So Meditations is less philosophy textbook, more personal Stoic coaching journal. That's a great way to put it. Yeah. Okay, so let's get into those core Stoic ideas then. The early guys, you said, they divided philosophy up. They did. The classic division, especially from Chrysippus onwards, was logic, physics, and ethics. Logic, physics, ethics. Logic was about, reasoning, knowledge, how we know things. Physics was the study of the universe, nature, cosmology, how everything works. Right, the big picture. And ethics was the payoff, really. How to live a good, virtuous life within that natural order based on reason. They saw them as interconnected. You need to understand reality physics and how to think clearly, logic, to live well, ethics. Makes sense. So where did Marcus put his energy? Was he juggling all three? Well, he knew about the division. He mentions it once in Book 8, but his focus, overwhelmingly ethics. Really? Oh, yeah. He actually says he's grateful he didn't get sucked into logic chopping or preoccupied by physics. Huh. So not a fan of abstract debates then? Seems not, at least not for their own sake. You see tiny hints he knew about Stoic ideas on language, like a clever wordplay once. Okay. But it's rare. Our notes suggest his logic is often more rhetorical, trying to convince himself rather than strict philosophical argument. You don't find many developed proofs. And physics, the nature of the universe stuff. Same story, really. His interest seems limited to how it impacts us, human problems, our place in the cosmos. There's a core Stoic idea about the universe ending in fire and restarting the ekpyrosis. Right. He's kind of agnostic about it, like maybe it happens, maybe it doesn't. For Marcus, it all comes back to ethics, how to live. He has that great line, right, about giving up on being a great thinker. Exactly. Just because you've abandoned your hopes of becoming
a great thinker or scientist, don't give up on attaining freedom, achieving humility, serving others. That sums up his priority. It's about living well, practically. Okay, ethics it is. Let's unpack some of those key principles from meditations. This idea of the inner self, the hegemonicon. What's that about? The hegemonicon, it's central. It's basically our rational faculty, our mind, our ability to reason and choose. It's the command center. Inner core. Yeah, the Stoics saw it as the defining part of being human, the thing we really need to cultivate and protect. It's even described as a god within, because it connects us to the rational order of the universe. And the key thing is, it can't be harmed by outside stuff. That feels counterintuitive. It does, doesn't it? But that's the Stoic insight. External events, losing money, getting sick, people insulting you, they can affect your body, your reputation, your circumstances. Sure. But they cannot directly harm your reason, your inner self, unless you let them. Unless your judgment about the event causes the harm. It's about our judgment of the event. Exactly. Marcus writes things like, throw away your books, stop letting yourself be distracted, despise your flesh. He doesn't mean literally. Right, it's emphasis. It's emphasizing that the mind, the hegemonicon, is primary. It shouldn't be a slave to impulses triggered by external things. Our reactions come from our interpretation, not the event itself. Which leads right into this idea of being indifferent to externals. Things like fame, money, pain. Precisely. The Stoics labeled all those things, wealth, health, reputation, pleasure, pain, life, death, as indifference. Indifferent sounds. Dismissive. It's a technical term. Doesn't mean they have zero value. Like, health is generally preferable to sickness, right? Obviously. But it means they are morally neutral. They don't in themselves make you a good or bad person. And crucially, they aren't fully under our control. Okay, that's the key. Control. Yes, chasing things you can't control or desperately avoiding them leads to suffering. So Stoics say, focus your energy on what you can control. Your judgments, your intentions, your actions, your inner virtue. So prioritize integrity over applause, basically. That's a good way to put it. Marcus is constantly reminding himself of that. Don't get worked up about external stuff. Focus on being virtuous inside. Think about getting a nasty comment online. Stoicism says the sting you feel isn't inherent in the comment, it's your judgment about the comment. You can choose to lessen its power by recognizing it's external. It can't touch your core self unless you grant it permission. That takes practice, I imagine. A lifetime of practice. So if externals are indifferent, what guides us? Acceptance seems big. Huge. The Stoics believed the universe is fundamentally ordered, rational, governed by natural law, or what they sometimes called providence or God. A cosmic plan, sort of? Kind of. And everything that happens, even stuff that seems bad to us individually, is part of this larger order and ultimately serves the good of the whole system. So acceptance isn't just giving up. No, it's active alignment. Living in accordance with nature means understanding this order and accepting our place within it. Accepting what happens as necessary for the whole. Marcus says, what is divine is full of providence. Even chance is not divorced from nature. He uses that analogy of the world as a city. Yeah, a great one. We're all citizens of this cosmic city, each with duties to perform. Acceptance is understanding that role and playing our part willingly. And being citizens means interacting with each other. The social aspect seems really strong in Stoicism too. Absolutely fundamental. Humans are inherently social animals for the Stoics. We all share in logos this universal reason. So we're connected. Deeply connected, which implies a duty to cooperate, to work for the common good. Marcus hits this note again and again. Human beings are social animals. We are made for others, not just ourselves. Which means? It means acting justly, fairly, kindly towards others, recognizing our shared humanity, our role in the collective. It's about seeing the bigger picture, the whole community. It's a very outward-looking aspect alongside the internal focus. Now, a heavier theme, mortality. Meditations doesn't shy away from death and change. Not at all. The Stoics were acutely aware of impermanence. Everything changes, everything passes, nothing material lasts. So death isn't this awful aberration. It's natural, inevitable, part of the cycle of nature. Marcus uses that powerful image of time as a river, a violent torrent washing everything away. Wow, intense. It is, but the point isn't to be morbid, it's to appreciate the present. He even tells himself to stop obsessing over acquiring more knowledge, discard the thirst for books, so he doesn't die bitter, having missed out on living. Right. Recognizing fragility helps you value the now. Exactly. It strips away illusions of permanence, focuses you on what matters here and now.
So how do you actually do all this? How do you integrate it? Self-examination seems key. Crucial. It's a core practice. Marcus is constantly telling himself to consider frequently his thoughts, his actions, life, death, other people's behavior. Like a daily check-in. Pretty much. A moral inventory. Are my thoughts aligned with reason? Are my actions virtuous? Am I getting upset about externals? It's about conscious awareness and course correction. And it's interesting that meditations itself feels like that process in action, but wasn't meant for us to read. That's such an important point. It wasn't a polished book for publication. It's his private notebook. His working notes. Exactly. We can't easily date the entries, shouldn't read too much specific biography into every line. Its unity comes from those recurring themes, the things he kept wrestling with, trying to embed in his daily life as emperor. The pressure must have been immense. Unimaginable. And the form itself, those short, disconnected entries again, it echoes Epictetus's Enchiridion. Yeah. It feels like we're listening in on his internal monologue, his self-coaching. Almost like peeking at his philosophical toolkit. And he clearly credited others for helping him build that kit. Book 1 is full of thank yous. It really is. It's a beautiful testament to his influences. He thanks his grandfather Verus for teaching him manners and controlling anger. His adoptive father, Antoninus Pius, who was his predecessor as emperor. Right, a big role model. Huge. Marcus admired his rationality, stability, patience. He thanks his mother for piety, generosity. His great-grandfather for ensuring he had a good private education. Teachers too. Oh, yes. Rusticus, who gave him the Epictetus connection and taught simplicity. Sextus, for showing him how to live according to nature with kindness. Even his rhetoric teacher, Fronto, for lessons on speaking truthfully. It shows how much he valued learning from others, even as emperor. Definitely. It paints a picture of someone very deliberate about his own moral and intellectual growth, constantly learning. So let's bring this home for the learner listening today. What are the big practical takeaways from this deep dive into meditations? I think, especially for navigating today's world, the constant noise, the feeling of being pulled in a million directions, the core message is about building that inner resilience. Finding your anchor. Exactly. Focusing your energy on what's truly yours, your thoughts, judgments, choices, actions. Learning to accept the rest, the stuff you can't control, with a sense of calm, of equanimity. It's a framework, really. It's a powerful framework for processing information, for responding to challenges, for finding stability inside, even when the outside world is chaotic. Your own inner stoa, your porch of tranquility. Okay, so summarizing our dive, meditations shows us a stoicism focused on mastering our inner world, our reason, accepting what's beyond our control, recognizing our social duty, our connection to others, and facing impermanence, change, and death with clarity, all guided by reason and nature. Well put. And that leaves us with something for you, the listener, to really chew on. In a culture so often obsessed with external validation, with likes and follows and fleeting trends, how can the Stoic focus on inner virtue, on what you control, offer a more solid, more meaningful way to navigate life? Or maybe, how can accepting change, accepting our own mortality, like the Stoics suggest, actually help us appreciate this present moment more fully, more deeply? Powerful questions. Worth reflecting on. Indeed. Thank you for joining us on this deep dive. We definitely encourage you to pick up meditations yourself, maybe with some fresh eyes now. Until our next exploration.